So good morning children, once again we have come back to start with the chapter 5 and hope so that today we will finish this chapter. Today we are going to do some of the families. Okay, so we are on page number 78. Description of some of the important families. Now there are three families. Okay, now out of the three families, one family, that is the Fabaceae, is no more in the course this year. So we will leave Fabaceae just for the introduction. Fabaceae is the family which is earlier used to be known as the Papilionoideae, and this family includes all the legumes. Okay, so it is a very important, like economically it is very important family, but I don't know what was CBSE's plan, so they eliminated this. So if we get some time left at the end of this period, then we'll come back and we'll do that also. Anyway, we shall start with Solanaceae, which is in the page 79. Solanaceae is again a very important family because it is very commonly used in our day-to-day life. It includes, see, it is written, it is a large family commonly called as potato family. Now potato family not because of its shape or its this thing, but it includes potato, one of the major member of this. And beside potato, it has got brinjal, it has got tomatoes, it has got all what you call chilies and all. So it has got many important things which we are using in our day-to-day life. Okay, so that is why it is very important. Vegetative characters we shall start with. So most of the plants which belong to this family are actually herbs. Okay, so plants are mostly herbs. Some may be shrub and rarely small trees. Very rarely. ठीक है, stem कैसे होंगे? The stems are herbs because small है तो they are herbaceous. Rarely woody when they are small trees. Aerial, erect, going up, and cylindrical, branched. ठीक है, branch, that is they may have some branches, and the stem may be solid or sometimes hollow even. Okay, stem may be solid, but if sometime you cut it, you may find inside that it is hollow. ठीक है, hairy or globerous. Now what is meant by hairy? That is when the stem has got small minute hairs, like if you see in the brinjal or even potato, and if they are smooth enough, they no hair like extension on that, then they are called glabrous. Underground stem, as in case of potatoes. ठीक है, the biological name you remember, potato का Solanum tuberosum. Next, the leaves are alternate means one left right. Okay, so that way if they are arranged on a stem, then they are called alternate. Simple, that is no branch, that is one leaf as a whole. Okay, and rarely pinnately compound. Pinnately compound and simple I already described it when I was describing about the leaf. Of course, I said it is not in course yet. I described if it is this type of leaf, or even if it has got some cuts, but the cuts are not reaching up to the midrib, then we call it as a simple. Pinnately में क्या होगा? That is the cuts were so prominent that they are reached up to the midrib, and then each leaflet is individual. You can separately identify them, as in case of neem, as in case of rose and all. So they are, each leaflet can be separately identifiable. Okay, which are attached on a what do you call pinna. So then it is called pinnately compound leaf. So we have got some example of pinnately compound. Mostly they are simple. Okay, exstipulate. Exstipulate होता है, stipule क्या होता है? Stipule is an extension which is found here. A little like small extension, maybe very small or whatever. It should be an extension. If it is there, then it is called stipulate. If it is not there, then it is called exstipulate. Venation is reticulate. Reticulate also, if you remember, we have done, that is one midrib will be there, several small ribs will be there, veins will be there, and from that veinlets will be there, and they will be forming a network. So whenever the network is there, reticulate word is used. Okay, this type of venation is there, then it is called reticulate venation. Floral structure we will talk about. Inflorescence, that is the arrangement of flower on the stalk. They are usually solitary.
ठीक है, at the tip, at the end of the branch it will be one flower will be there. Sometimes it is axillary or cymose. Cymose, you will remember, cymose, that is the main axis ends up in a flower, then the next flower will come from the branches, then they may again have a flower or may not, it's not necessary. That all condition I already explained you in case of inflorescence. So cymose type can also be there as an example of solanum. Okay, flower की बात करते हैं. Flower is always bisexual, that is it will have male androecium and female, that is gynoecium, both the structure presenting one flower. Actinomorphic, if you remember, that is when flower is radially symmetrical, that is each line passing through radius which divides into two equal halves. So you get more of option, that is a flower can be cut into two equal halves from more than one plane. It is called radially symmetrical or actinomorphic. Now radially symmetrical word we use for animals, but for plants, that is for flower we use actinomorphic. Calyx, that is the outermost roll, that is usually green. Sepal are 5 united. Okay, brinjal you all must have seen, many of you may be using brinjal, week में एक बार बन भी जाता होगा घर में. Now if you have seen the brinjal, both चाहे वो गोल brinjal हो चाहे लंबा वाला हो, that is भी एक गोल वाला बना लेते हैं. Now you must have seen the sepals attached on it. Now all these sepals are attached, joined together. ऊपर आकर के फट गए होंगे, but lower, that is from the base they are combined together. When they are combined together, that are called gamosepalous. So they are united. Okay, and persistent. Now word persistent means even after fruit is formed, the sepals are found attached on it, then it is called persistent. ठीक है. Velvet excavation, velvet you remember, velvet, that is end to end. ठीक है. No one is none of the end of the petal or sepal is covering the other sepal or petal. Corolla की बात करते हैं. They are also 5 united, persistent. ठीक है. नहीं, corolla कहाँ से persistent होगा, गलत, वो ऊपर का पढ़ लिया. ओके, तो petals are 5 united and velvet excavation, again end to end. ठीक है. None of them is covering other. Okay, androecium again 5, and now another important thing, that is epipetalous. Now if I told you, if you get a chance to open a flower like dhatura, very commonly you will find around you, okay, or petunia or brinjal. If you during this lockdown, many people started cultivating vegetables either on the terrace gardening or anywhere. So अगर आपके पास है ब्रिंजल का एक फ्लावर पर्पलिश कलर का होता है, very beautiful, छोटा सा, तो if you open it and you will find that suppose this is a petal, this is a one petal, so the androecium is found attached to it up to a certain height, certain distance. इसके बाद वो आगे फ्री रहेगा. ऊपर से देखेंगे तो फ्री दिखेगा, but if you remove a petal you will find that the androecium is found attached with it. So when the androecium, that is the stamen, is found attached to the petal, it is called epipetalous. So this is a very important character here, epipetalous. Gynoecium कैसा है? Bicarpellary. Bicarpellary means there are two carpels. Okay, two distinct carpels. You can see. आपको कहाँ मिलेगा आपको? Any of these flower, if you see, standing here and explaining is of no use. So bicarpellary, ये जो हमारा carpel है वो बाहर जाकर के it will divide like this. So two carpels will be there, but syncarpus, both the carpels will join together. Then it is called syncarpus. Ovary is superior. We have studied now where its ovary is. If on the thalamus, on a thalamus, this is the thalamus. All the rolls are born below ovary, sepals. The petals are also grown here. The androecium are also grown here, and then the gynoecium सबके ऊपर चढ़ के बैठ गई हो. Ovary अगर सबके ऊपर चढ़ के बैठ गई है, sitting on top of all other rows, then it is called superior, and that condition is called hypogynous. So this ovary is hypogynous. Okay, so superior ovary and bilocular placenta.
Okay, if you cut open the ovary from here and see it on the slide, you will find that it has got two locules, two divisions, and on which there will be number of placenta. As many placenta are there, as many seeds will form. So you all must have eaten brinjal at least. बार बार मैं ब्रिंजल का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। नाम हिंदी में उसको बेगुन कहते हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा गुण रहते हैं, बिकॉज इट इज रिच ऑफ आयरन। इफ यू कट ब्रिंजल एंड कीप इट फॉर सम टाइम, इट विल टर्न ब्राउन बिकॉज आयरन गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इट इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, सो वन शुड नॉट से दैट इट इज बेगुन, ये तो बहुत रिच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी सारे सीड्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स नाउअडेज वी गॉट द हाइब्रिड वेराइटी और अदर बायोटेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी विच द सीड्स आर लेस, ठीक है। सो अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू मेक भरता और ब्रिंजल, वी यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ सीड्स। नाउ ऑफ कोर्स इट इज लेस, सो दे आर हाइब्रिड वेराइटीज विच आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द प्लेसेंटा, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स, सोलन एंड मेनी ओव्यूल्स। तो जितने ओव्यूल्स रहेंगे उतने ही सीड बनेंगे। नीचे भी देखेंगे सीड्स में भी लिखा है मेनी। नाउ फ्रूट्स कैसे हैं? फ्रूट्स कैन बी बेरी, बेरी मीन जूसी, ठीक है। टोमेटो जूसी, ब्रिंजल आल्सो रिच, फुल है, ठीक है। सो इफ इट इज देयर देन इट इज कॉल्ड बेरी, एंड इफ इट इज ड्राई देन इट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, चलो ड्राई का एग्जाम्पल ये, या कैप्सूल फॉर्म में भी ये मिल सकता है, एज इन केस ऑफ ब्रिंजल, चिली एंड ऑल। ओके, वैसा हार्ड नहीं होती चिली, बट फिर भी हो। सीड्स कैसी है? देर आर मेनी सीड्स। नाउ एज मेनी ओव्यूल्स आर देयर, एज मेनी सीड्स विल फॉर्म, ठीक है। सो दे गॉट प्लेंटी ऑफ ओव्यूल्स, सो प्लेंटी ऑफ सीड्स विल बी देयर। एंड कैसे सीड्स एंडोस्पर्मस, तो उसमें एंडोस्पर्म रहेगा, दैट इज द न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइड बाय द एंडोस्पर्म फॉर टू द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, फ्लोरल फॉर्म काम तो करना पड़ेगा। वंस द स्कूल ओपन देन वी विल डेफिनेटली डू सम ऑफ द फ्लावर्स, द पूरा तो करेंगे, चैनल्स तो करेंगे। दीस आर द ऑल ऑफ द कॉमन फ्लावर व्हिच वी गेट, एंड दे आर फ्रॉम एजेस, दीस आर द फ्लावर्स व्हिच वी आर डूइंग। ओके, फ्लोरल फॉर्मूला एज आई सेड, कैसे हैं ये? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, calyx 5 united, corolla 5 united, endoecium 5, epipetalous, gynoecium, bicarpellary, superior। ओके, तो ये देख लीजिए, एंडोशियम फ्री है, कोरोला एंड कैलिक्स यूनाइटेड है, एंड बाइसेक्सुअल है। तो दिस इज द फॉर्मूला। अभी तक जो भी कुछ अपन ने पढ़ा, दैट whole thing can be described in this simple formula. And the floral diagram you can see, floral diagram is not given, नहीं दिया तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये रहा floral diagram F. So you can see mother axis is the arrangement of the sepal is between the two axis. The mother axis is here, the two sepals will be facing to the in between the calyx. Okay, so 5 calyx are there, all are united. तो united है तो उनके ऊपर कैप लगा दिया। If you can see, I can point out here, this is these caps जो हैं, they are showing, these are representing the united state. Okay, so these are united. और calyx है वो भी 5 है, and they are also united. And since they are end to end, none of them are covering the other one, so this is velvet type of estivation. So velvet estivation in calyx, velvet estivation in corolla. Now corolla, one of the corolla, that is the first corolla, is facing, its center is facing to the mother axis. You can see, you have to be very careful when you are drawing the floral diagram. All the sepals and petals should be of that is the relative sizes. It should not be that the one is big and the other one is small, जैसा बना दिया है चाहे नहीं, it should be, and the calyx will always be of this type of shape, that green color which is there, ना का कलर भरना जरूरी नहीं है। Okay, and corolla जो है they are quarter moon shape. Okay, and then the endoecium are there, 5 endoecium, है ना, each one of them are found attached to the petals. Okay, so one line is joined to the petals. Of course, this is wrong place, it should be from the center. Okay, and the gynoecium, bicarpellary, देख रहे हैं दो पिंक कलर के दो क्या कहते हैं
लोक्यूल्स आपको देख रहे हैं, एंड देर आर many ovules are there. So each ovule will later on develop into a seed. Economic importance पढ़ते हैं तो बहुत important, that is why we are studying. देखिए many plants belonging to this family are source of our food, tomatoes, brinjal, potatoes, chili. और वो जो कभी फुंसी गुमड़ी हो जाती है ना, then we go to the doctor and they say वो black tape लेके चिपका देना, belladonna, ठीक है. अश्वगंधा, those who uses Ayurvedic medicine, most of the medicines of Ayurveda include ashwagandha. Then fumigatory जैसे tobacco, ठीक है, कोई अच्छी बात तो नहीं है पर भी है. ऑर्नामेंटल में पिटूनिया खूब ग्रो कर रखे हैं, आपके भी घरों में हो रहे होंगे. एंड पिटूनिया, अर्लियर पिटूनिया used to come only in purplish white color. Now पिटूनिया are available in all possible color. पिंक पिटूनिया, रेड पिटूनिया, व्हाइट पिटूनिया, लाइन पिटूनिया, ठीक है, धारीदार, ये वो सब तरह की पिटूनिया हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है. ऑल दीज आर हाइब्रिड वेराइटी. कम टू द नेक्स्ट फैमिली, दैट इज लिलिएसी. जितने भी बल्ब वाले आते हैं, कौन सा बल्ब सबसे कॉमनली हम घर में यूज करते हैं? अनियन एंड गार्लिक, ठीक है. लिली, वो ईस्टर लिली आती है, रेड कलर का फ्लावर, सॉलिटरी बड़ा सा एक फ्लावर, है ना. तो दोज आर लिलिएसी, कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली. ओके, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडेंस. वो डाइकोट का था, ये मोनोकोट का है, ठीक है. इट इज डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड ओवर, सब जगह मिलते हैं. कहाँ नहीं मिलता? अनियन, मारामारी चल रही है अभी थोड़े टाइम पहले. यू न्यू दिस वीडियो ऑल्सो कोई काफी टाइम बाद में देखे, बोले अरे अच्छा दैट टाइम अनियन यूज्ड टू बी अवेलेबल फॉर 80 रुपीज, देन 60 रुपीज, नाउ इट इज ऑफ कोर्स 40 रुपीज. So these are also important. So whenever this video will be seen after 2 years, 3 years, 4 years, they will say अच्छा उस टाइम अनियन इतने रुपए का मिलता था. चलिए, तो ये मोनोकोट का रिप्रेजेंटेशन है और ये दुनिया भर में मिलता है. वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? दे आर जनरली हर्ब्स, सब और ट्रीज वगैरह हमको इसमें मिलते हैं. पेरिनियल हर्ब्स, perennial means that food will be stored in the bulb and from there again next plant will be grown and all, so it will be there forever, ठीक है. अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म, ठीक है. कॉर्म भी आपको बताया था मैंने, अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा टाइप का होता है? कॉर्म, दैट इज अरबी वाला, ठीक है. एंड राइजोम, राइजोम किसमें मिलते हैं? जिंजर में. ओके. लीव्स कैसे हैं? मोस्टली बेसिल. बेसिल लीव्स का मतलब क्या है? दे आर कमिंग फ्रॉम द बेस, दे डू नॉट हैव stalk, leaf stalk. Petiole is not there. Petiole is not there. Now आपको काफ़ी सारे लिली फैमिली के मिल जाएंगे. मेरे यहाँ सामने उग रहा है एक लिली फैमिली का, बहुत सारे टाइप के प्लांट मिल जाएंगे. जिंजर यू कैन सी एंड गार्लिक यू कैन सी एंड अनियन यू कैन सी. अनियन तो बाजार में भी मिल ही रहे हैं. यू जस्ट गो ब्रिंग वन स्प्रिंग अनियन एंड यू कैन easily see it. Okay. तो what type of structure are there? तो लीव्स मोस्टली बेसल है, इसकी नींव नीचे से निकल के आ रही है, ठीक है. बेसल है, बेस से आ रही है ना. देयर इज नो स्टॉक. तो इफ यू सी एनी मोनोकोट प्लांट इज लाइक दैट ओनली. सो इन केस ऑफ अनियन, दिस इज द लीफ, ये लीफ आ रही एंड ये अनियन को पूरे को सराउंड कर देंगे, ठीक है. यू फाइंड लीफ ग्रोइंग लाइक दिस. Now you can't make out that when the leaf stalk is there. There is no stalk or there is no petiole there. Okay, all are coming from the base. तो ये basal है. Alternate है, one left one right. That you have to be very carefully. So this is an activity I can give you. Just either you must be having in your home, फ्रिज में होगा शायद एक स्प्रिंग अनियन, नहीं होगा तो इन नियर फ्यूचर इट विल बी कमिंग. नहीं है तभी मम्मी से बोलना आपकी सब्जी लेने जाओ तो ब्रिंग वन स्प्रिंग अनियन एंड यू कैन इजीली सी इट. ओके. ऑल्टरनेट. लीनियर क्या है? दैट इज इफ यू सी द वेन्स, दैट इज द वेन हेयर केयर शो, दैट इज इट नॉट रेटिकुलेट. हियर ऑल द वेन्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस विल रीच टिल द टिप, ठीक है. नो ब्रांचिंग, यूजुअली देयर इज नो ब्रांचिंग and there is no midrib and there is nothing like that. Okay, so this type of arrangement is called linear venation. Exstipulate, कोई स्टिप्यूल है ही नहीं, हो गई नहीं, बेसिली है ये तो, है ना. तो petiole is not there, तो where the stipule will be there with a parallel venation that we have stated. Okay, now floral parts, floral structure क्या है? Inflorescence solitary, एक ही फूल लगेगा टिप पे जाके.
Now that one flower मतलब it can be one flower or it can be many flower on the tip, ठीक है, तो that is solitary. साइमोस हो सकते हैं, साइमोस ही होंगे वो, क्योंकि टिप पे फ्लावर लगना होगा साइमोस. ऑफन अम्बुलेट क्लस्टर. ना अगर आपने सौंफ देखा, सौंफ, जीरा, these carrot, they all have flowers which are on the tip, and there are number of flowers which are like arranged like this, and they may give a umbrella like structure. ये stop खत्म हुआ वहाँ पे, and each will there are number of flowers which are there. Now all these flowers arranged in such a way that stalk of the each flower is of same size, umbrella. ठीक है. In some you will find that all will have different size of the stalk, so that all the flowers will come at one level. ठीक है. Science very interesting. One has to go down to the ground to see. ऐसा थोड़ी है घर में बैठ जाएंगे and you will be saying हाँ ठीक है. Now everything, yesterday I got one message. Nowadays everything a child, a person is doing on a sitting on the chair and table. ठीक है भाई, वो कुछ भी ऑर्डर करना है उससे आ जाएगा, खाना भी उससे आ जाएगा, सामान भी उससे खरीद लेगा, ऑनलाइन परचेसिंग, ऑल न्यूज यू वॉच ऑन टीवी, ऑल सीरियल यू वॉच ऑन टीवी, एवरीथिंग ऑन टीवी, सिटिंग ऑन वन डेस्क एंड सिंग. टीवी की जरूरत नहीं है, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं. तो एवरीथिंग विल बी डन ऑन अ लैपटॉप. लैपटॉप की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग कैन बी डन ऑन मोबाइल. आने जमाने में क्या आएगा पता नहीं, सिंग यहाँ लगेगी एंड यू विल बी सीइंग ऑन एवरीथिंग ऑन योर आईज ओनली. ओके, गूगल चश्मा तो आ ही रहा है अपने वाले टाइम, देयर यू हैव टू पुट एंड एवरीथिंग कैन बी देयर. चलिए, टेक्नोलॉजी. फ्लावर कैन से बाइसेक्सुअल, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर विल बी देयर. एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, दैट इज कैन बी कट इनटू टू इक्वल हार्ट फ्रॉम मोर देन वन प्लेट. नया वर्ड है पेरियंथ. व्हाट इज पेरियंथ? आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. व्हेन सेपल एंड पेटल्स लुक अलाइक, you cannot differentiate which one is sepal and which one is petal except for their arrangement. Sepal will be in the outermost roll and the petal will be little, that is second roll. Okay, so rolls को देखेंगे, then you can make out that which one is sepal and which one is petal. Otherwise both sepals and petals are same in color, then this is called perianth. And the common term is tepal. तो tepal कितने दिए हैं? 6. 3 sepal वाले थे और 3 petals वाले थे, तो 3 + 3 लिखे. Often united, they may form a bulb-like structure, but often, not always. ठीक है, united into a tube. Velvet estivation, end to end. ठीक है, वैसे तो alternate fashion में है, लेकिन वो end to end ही आ जाते हैं when they grow open. Okay, endoecium जैसे stamens जो है, they are 6. ठीक है, 3 will be attached to the tepal, क्या कहते हैं, sepal, and 3 to the petals, that is all together they are tepals. ओके, तो एपिटेपलॉइड कंडीशन हम इनको कहेंगे. गाइनोशियम कैसे हैं? एपिटेपलस कंडीशन लिखा है. गाइनोशियम कितने हैं? ट्राइकार्पलरी, एक ही ओवरी बट 3 कार्पल्स हैं, तो 3 सेगमेंट्स मिलते हैं, बट इट इज वेरी. ठीक है, एंड इनसाइड विच द ओव्यूल्स विल बी देयर. Okay, so an ovary is superior and trilocular with many ovules, axial placentation. Axial, ठीक है, axial पहिया होता है, बैलगाड़ी का पहिया, कोई भी गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, एक सेंट्रल हब होता है, उसमें से काफी सारे एक्सिस निकल रहे होते हैं. सेंट्रल हब एंड मेनी एक्सिस आर देयर, तो दिस इज एक्सियल. ओके, तो एक्सियल प्लेसेंटेशन. फ्रूट कैसा है? कैप्सूल और रेयरली बेरी, कभी कभार ही होते हैं, अदरवाइज वो कैसे रहेंगे? कैप्सूल, थोड़े थोड़े सॉलिड टाइप के. ठीक है, सीड्स एंडोस्पर्म्स, तो एंडोस्पर्म विल बी देयर. चलिए, इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लीजिए. ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, तो बी आर लिखेंगे. एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, कैन बी कट इनटू 2 equal parts from more than one plane. Bisexual, perianth 3 + 3 and united. Androecium 3 + 3, but they are attached to the perianth. Okay, एंडोशियम अपने आप में इंडिविजुअल है, बट बेस में दे आर अटैच्ड टू द पेरियंथ. गाइनोशियम ट्राइलोक्युलर, ओवरी इज सुपीरियर, लिखा ही नहीं है,
आप इसके नीचे जी के नीचे एक लाइन खींच दीजिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ये पहले इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। दिस इज मदर एक्सिस, दीज थ्री आर द सेपल, टेपल्स जो सेपल से डिराइव हुए हैं, दीज आर द थ्री विच आर डिराइव फ्रॉम पेटल्स एंड द एंड्रोशियम हर एक से निकले हुए हैं एंड दे आर अटैच टू द टेपल्स, ठीक है। तो एपिटेप्लॉइड हो गया एंड ट्राइकार्पुलरी ओवरी, एक्सियल प्रेजेंटेशन एंड नंबर ऑफ देम और नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर देयर। दिस इज अ कॉमन फ्लावर ऑफ लिली। ओके, एग्जांपल्स पढ़ते हैं दैट आर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो दे आर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू लाइक ट्यूलिप एंड ग्लोरोसिया एंड देन सोर्स ऑफ मेडिसिन एलोवेरा। आजकल तो हर कोई है फेस पे भी एलोवेरा, मेडिसिन के फॉर्म में भी एलोवेरा, लाइक एलोवेरा इज वेरी कॉमनली यूज एंड तो दिस इज एलोवेरा इज ऑल्सो ऑब्टेन मतलब बिलोंगिंग टू दिस फैमिली। वेजिटेबल में एस्पार्गस एंड कोलिकेसिन। Colicasin will be using in the laboratory or we to hardly use, but colicasin is actually used by the cell, those who are studying about the cell division. So at the time of cell division, if one drop of colicasin is added, the cell division will suspend there only. It will not go further because it dissolves the spindle fibers. So the anaphase and telophase condition will never arise. So it is for those people who want to study a cell. We know that the metaphase, the chromosomes are most clearly visible. So for them it is very important. So with this we come to the end of the chapter. Question answers are there. 1 minute is there. Now 1 minute में क्या question answer करेंगे देखते हैं. What is meant by modification of the roots? That is where the roots are carrying out any other function than the anchoring and absorption of water. So these are the primary function. If any other function is carried out, then it is called modification. What type of modification of roots are found in the banyan tree? Top root suspending from the their what you call nodes, and that is providing extra support and absorption of water. Turnip, food storing. Okay, the turnip, the root become swollen and it takes the nutrient. Mangrove, this is, I did not explain it that time, that's why course में if mangrove, those are the plants which are growing in a marshy region, and the marsh is actually in the place where there is no nitrogen found in their water. So all these plants will have some of the roots which grows upwards, ठीक है, and they have holes. These holes are called pneumatophores and they are carrying out respiration. So respiration reed, breathing reed roots, pneumatophore containing roots, they are called mangrove. Justify the following statement on the basis of external feature. Underground parts of the plants are not always roots. Yes, stem हो सकते हैं पोटैटो के अंदर, जिंजर के अंदर, अनियन के अंदर, गार्लिक के अंदर, टर्मरिक के अंदर. They all are underground modified stem because they are, first of all, they are on nodes and internodes. Secondly, they are green at least when they are young. ठीक है. Flower is a modified shoot. So that is, there is an axis on which the number of flower used to be there. If we compress them, it appears they are, it is modified into a flower. So all the roles of the flower, that is the sepal, petal, androecium and gynoecium, they are all modified from the leaves. Okay, how is pinnately compound leaf different from the palmately compound leaf? Pinnately compound leaf, just now I had drawn here. Palmately compound leaves, that is, there will be one axis on which all the leaves will be attached in one point. Then it is called palmately compound. Explain with a suitable example the different type of phyllotaxy. So we have studied the phyllotaxy, that is the arrangement of the leaves on an axis. There are 4 types we have studied. There are many actually. See, this class 11 as such we are course is highly reduced, and out of that also many chapters are being removed. क्या करें, कोरोना है. That engineering college ने तो कह दिया that is in our degree will pass everyone and will write because of corona they have passed. Imagine after 10 years you take the certificate, what will be the value of it? So axis is there, and if the leaves are found attached on the one point, one in left and one in right, it is called opposite. One goes on left, after some right, left and right and the left, then this is called alternate. If all the leaves are born on one node itself, then after some height again, so then this is called rolled one, and the fourth one is
spiral. One after every little height, the leaves grows in a different angle. Okay, so they are spirally moving. Okay, then it is called spiral. Okay, example you can see China rose. This is no, I don't know. That is in case of example you see on the book. Okay, define estivation. Estivation is arrangement of sepals or petals on the with respect to each other. Okay, so there are 4 type of estivation we studied: velvet, twisted, imbricate, and vexillary. Okay, placentation, arrangement of the ovules on the placenta on the ovary. Okay, so that is called placentation. Actinomorphic is a condition when a flower can be cut into 2 equal halves from more than one plane. Zygomorphic is a condition when a flower can be cut into 2 equal halves from only one plane. Okay, superior ovary, where this ovary is placed highest and all other rows, that is the sepal, petal and rhizome, are found growing below it. Perigynous, when the ovary is half superior. Okay, and the thalamus form a cup-like structure, half cup-like structure on which the ovary is there and other rolls are formed on this. Epipetal is stamen, when the stamens or that is androecium are found attached to the petals. Okay, now other questions Joanne, that we will do in the next class tomorrow. That's all children. Thank you.